Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna. Hare Krishna, Mataji. Hare Krishna. Vamshi Vishal Prabhu, we can start. Krishna. Yes, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama, Hare Hare. Mama Jnanatimirandasya Jnananjana Shalakaya Chakshur Unmilitam Yena Tasmai Shri Gurave Namaha. Namo Vishnupadaya Krishna Preshthaya Bhutale Srimate Jayapataka Swaminiti Namine. Namo Acharya Padhaya Nitai Kripa Pradhaine Gaurukata Damadaya Nagara Gramatarine. Namo Vishnupadaya Krishna Preshthaya Bhutale Srimate Bhakti Vedanta Swaminiti Namine. Namaste Saraswate Deve Gauravani Pracharine Nirvisesha Shunyavadi Paschatya Desha Tarine Pancha Kalpatarubhyascha Kripa Sindhubhyevacha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha. Jai Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Shri Vasadi Gaura Bhakta Vrinda. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Rama Ram, Hare Hare. Hare Krishna. So, Dandavad Pranams to all the devotees. Welcome you all for the 50th online JSSS program. I'm Medhavani Sakhi Devi Dasi, serving as your host this evening. Today, for the 50th online JSSS program, we have a very special guest who is joining us for our JSSS meeting and addressing us. We have His Grace Marici Prabhu. Hare Krishna Prabhu, thank you so much for joining us for our 50th online JSSS program. It's indeed my fortune and honor to speak a few words in glorification of Prabhuji. His Grace Marici Prabhu is from Argentina. He joined Krishna consciousness in 1984, and he took initiation from Zonishla Jayapataka Swami Shri Guru Maharaj in the same year, which was way back in 1984. And Prabhuji got his Brahminical initiation in the very next year, 1985. Prabhuji got his Brahminical initiation, and Prabhuji has been doing very wonderful services right from 1984, serving in several capacities as a cook, the pujari, the temple president, public relations officer, and secretary for ISKCON for over 6 years. In 1991, Prabhuji moved to Mayapur Dham, and therein also got the opportunity to serve as Shri Guru Maharaj's servant. And in 1993, Prabhuji started doing secretarial services for Shri Guru Maharaj, which Prabhuji is continuing even till today. And Prabhuji is also part of the JPS Seva Committee, Jayapataka Swami Seva Committee. Prabhuji is part of the member of the temple management team of Shri Jagannath Mandir, Kuala Lumpur, Malaysia. Prabhuji has been serving Guru Maharaj since 1989 for the safari, very well-known safari. This year, especially in 2024, when we're celebrating Shri Guru Maharaj's 75th Vyasa Puja, there is a special safari which Prabhuji will give us more details about. Wherein Guru Maharaj is going to install Lord Chaitanya's lotus footprints in various Leela Stalis of Vrindavan Dham. So more on that from Marici Prabhu. Let us welcome His Grace Marici Prabhu by loudly chanting the Hare Krishna Mahamantra. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna Prabhu, over to you. Thank you so much for joining in. Dandavad Pranams. Hare Krishna. Medhavini Sakhi Mataji, Hare Krishna. My obeisances, can you hear me okay? Everyone can hear me? Yes, Prabhu, loud and clear. Yes, Prabhu. Thank you, Mataji. Thank you, Bansidhara Prabhu. Also, thank you to all the devotees from Mumbai, my God brothers and God sisters, for this invitation. It is a great privilege for me to be in front of you, all my God brothers and God sisters. Hare Krishna.
So, how shall I start? Vamsidhara Prabhu, I just start. Yes, Prabhu, let's dive into the pastimes of Guru Maharaj. So we have Satyabhama Sadhavi Mataji, who would be, like I said, translating English to Hindi after every sentence. So we just pause after every sentence. I would request you to pause so that she can translate. Okay. Thank you, Satyabhama Mataji, for the translation. Hare Krishna, So- Danvat Pranam Prabhu. So maybe I just would like to start just for 1 minute to sing Guru Maharaj Pranam and Srila Prabhupada's Pranam. And maybe I will use one instrument I have here near me. I will use a guitar to sing the Pranam of Guru Maharaj. So you will be translating simultaneously, Mataji? Yes, Prabhuji. Okay. Hare Krishna. Let me see. Namo Vishnu Padaya Krishna Prestaya Bhutale Srimate Jaya Pataka Swami Niti Namine Namacharya Padaya Itai Kripa Pradajine Gauraka Damodaya Nagara Gramatarine Namo Vishnu Padaya Krishna Prestaya Bhutale Srimate Bhakti Vedanta Swami Niti Namine Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadara Srivasati Gaura Bhakta Vrinda Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare Hare Jai Guru Maharaj ki Jai. Okay. So, all glories to Guru Maharaj, all glories to Srila Prabhupada ki Jai. I just thinking how to begin this session today of Guru Maharaj Leelas. तो गुरु महाराज की जय, श्रील प्रभुपाद की जय। तो मैं आज का ये सत्र गुरु महाराज की लीलाओं को समर्पित करूंगा। You see, I was introduced that I joined Christian Conscience in South America, in Ecuador. मैंने साउथ अमेरिका इक्वाडोर में कृष्ण भावनामृत ज्वाइन किया था। You know that our beloved Guru Maharaj
he have a very big area for preaching and also as a GBC. हमारे प्रिय गुरु महाराज, आप जानते हैं कि वो एक जीबीसी हैं और उनके पास प्रचार के लिए एक बहुत बड़ा प्रदेश था। He's a GBC in many of the countries in India, many of the states in India, Bangladesh, Nepal, Malaysia, Middle East. गुरु महाराज जीबीसी हैं बहुत सारे देशों के लिए, न सिर्फ भारत बल्कि नेपाल, बांग्लादेश, मलेशिया, मिडिल ईस्ट। But he's also very merciful to the devotees from, this is the farthest continent, which is Latin America, which he accepted to be the GBC in the early 80s. लेकिन हमारे गुरु महाराज बहुत अधिक कृपालु हैं, दया से परिपूर्ण हैं, इसलिए उन्होंने सुदूर लैटिन अमेरिका के भी जीबीसी बनना स्वीकार किया। He's actually GBC for 4 countries, Chile, Bolivia, Peru, and Ecuador. तो वहां उन्होंने 4 देशों के लिए जीबीसी बनना स्वीकार किया, चिली, पेरू, इक्वाडोर एंड बोलिविया। But he travels every single country in Latin America, about 20 different countries. He constantly going there to encourage the devotees. और वो निरंतर यात्रा कर रहे हैं, इतनी दूर लैटिन अमेरिका के भी हर देश में वो जाते हैं। Latin America is very far away continent, so no, we didn't have many visiting sannyasis, gurus or preachers over there. Prabhuji, you said many preachers and sannyasis do not go there? Yeah, they do, because it's very far the continent, Hmm. and many they are not going there. प्रभु जी बता रहे हैं कि लैटिन अमेरिका जो है वो बहुत एक सुदूर प्रदेश है और वहां पर बहुत ज्यादा सन्यासी या दूसरे प्रचारक नहीं जाते हैं, लेकिन हमारे गुरु महाराज उधर भी जाते हैं। But Guru Maharaj, when I joined Krishna Consciousness in 1984, he was visiting South America 3 times a year. प्रभु जी बोल रहे हैं कि जब मैंने 1984 में कृष्ण भावनामृत में मैं आया था, तो गुरु महाराज तब वहां पर साल में 3 बार आया करते थे। The devotees in South America, they love Guru Maharaj. साउथ अमेरिका के जो भक्त थे वो गुरु महाराज से अत्यधिक प्रेम करते थे। The first time he came to South America, we know that, wow, this is a ISKCON Guru who is coming from Mayapur Dham. जब वो पहली बार साउथ अमेरिका आए तो हम उन्हें देख करके हमें लगा कि ओ जय, ये तो इस्कॉन के गुरु हैं जो बहुत दूर मायापुर धाम से यहाँ आए हैं। And he always liked to talk about the sweet pastimes of Lord Chaitanya Mahaprabhu. और गुरु महाराज को हमेशा भगवान चैतन्य महाप्रभु की सुंदर लीलाएं बताने में बहुत अच्छा लगता था। So whenever he comes to South America, you know, he's like a big, tall, lotus eyes, smiling, talking about Lord Chaitanya Mahaprabhu, and many people thinking, wow, he looks like Lord Chaitanya Mahaprabhu. गुरु महाराज सॉरी प्रभु जी बोल रहे हैं कि गुरु महाराज जब वहां पर आते थे, एक तो वो कद काठी में बहुत ऊंचे थे और उनकी सुंदर कमल नयन थे और चेहरा खिला हुआ, हमेशा मुस्कान थी चेहरे पर। तो जब वो वहां आते थे तो भक्तों को लगता था कि ओ ये तो बिल्कुल चैतन्य महाप्रभु के जैसे हैं। He also, of course, not everybody will see him like this, just a few, but everybody definitely will, how to say, will whenever he come, will transport them, will transport to everyone to the transcendental leelas of Lord Chaitanya Mahaprabhu. तो हर कोई इस प्रकार से नहीं देखता था, कुछ भक्त इस तरह से देखते थे, लेकिन गुरु महाराज वहां पर उपस्थित हर एक भक्त को भगवान चैतन्य महाप्रभु की सुंदर लीलाओं में
ट्रांसफर कर देते थे? Because Guru Maharaj carry the humor of Lord Chaitanya Mahaprabhu, the way also he preach and he's engaged in this Sankirtan movement. He carry his humor. ह्यूमर? Yes, his mood, the same mood of preaching, because what happened, is the way that he travels and he likes to spread the holy name of the Lord. हाँ, तो प्रभु जी कह रहे हैं कि गुरु महाराज चैतन्य महाप्रभु जैसा ही मूड या भाव लेकर के चलते थे, जैसे महाप्रभु थे जो प्रचार कर रहे थे, हर जगह यात्रा कर रहे थे, तो गुरु महाराज भी उसी भाव से जगह जगह यात्रा करते हुए और प्रचार करते थे। He will preach to everyone without any distinction. बिना किसी भेदभाव के गुरु महाराज हर एक को प्रचार करते थे। He will not see, oh no, this is my disciple, or this is, or disciple of other guru, or he's living inside the temple, outside the temple, he's a devotee, he's a karma. No, he will give mercy to everyone. वो ये बिल्कुल नहीं देखते थे कि ओ ये मेरे शिष्य हैं, ये मेरे शिष्य नहीं हैं, ये मेरे को पसंद है, ये नापसंद है। वो ऐसा कभी नहीं किसी प्रकार का भेदभाव करते थे। वो अपनी कृपा हर किसी को बिना किसी भेदभाव के बांटते थे। This is the same way like when he travels and distributes prasadam to everyone. I haven't seen any devotee in the movement and any sannyasi or any ISKCON guru. I haven't seen anyone in the world distributing as much prasadam as he does when he travels. What does he does, Prabhuji? I He missed. distributes Mahaprasada to people. He gives Mahaprasada. तो प्रभु जी बोल रहे हैं कि उनको कृपा बांटने का इतना गुरु महाराज की इतनी आदत है कि वो मैंने गुरु महाराज प्रभु जी बोल रहे हैं मैंने ऐसा कोई सन्यासी, कोई प्रभु, कोई आचार्य देखा नहीं जिस प्रकार से गुरु महाराज कृपा बांटते हैं प्रसाद के रूप में। वो हर किसी को हर जगह प्रसाद देते हैं। Like for instance, the first time I traveled with him out of the Calcutta airport, when I travel with him, I see how much prasada he distributes to the people outside the airport and also inside, even the workers cleaning, he will just give prasada to everyone. प्रभु जी बता रहे हैं कि मैं गुरु महाराज के संग जब यात्रा कर रहा था तो एक बार मैंने देखा था कि गुरु महाराज प्रसाद हर किसी को प्रसाद देते थे, यहाँ तक कि न सिर्फ भक्तों को बल्कि एयरपोर्ट पे आए हुए दूसरे सामान्य लोगों को भी और वहां पे काम करने वाले जो स्टाफ के लोग हैं उनको भी, हर किसी को। When he got to do the check-in to get his boarding pass, also he will make sure he gives prasada to all the staff members from airlines, and also he will ask what is the duty manager, and the duty manager will come from the airline and also will receive the prasadam from Guru Maharaj. गुरु महाराज जब बोर्डिंग पास के लिए लाइन में खड़े होते थे तब भी वो वहां पर ध्यान रखते थे कि वहां पे जितने भी लोग हैं स्टाफ के रिसेप्शन पे, काउंटर पे, वो सबको प्रसाद देते थे और अगर उनको ड्यूटी मैनेजर दिखते नहीं थे तो उनको बुलाया जाता था कि वो कहाँ हैं, उन्हें बुला करके और प्रसाद दिया जाता था। Then when he go to the immigration, also he will give prasada to the immigration, the one who is checking his passport. और फिर जब वो इमिग्रेशन की लाइन में जाते थे तो वहां पर भी वो इमिग्रेशन में भी जो स्टाफ होता था उसको प्रसाद देते थे जो उनके पासपोर्ट को चेक कर रहे हैं। And then, he's so attractive when he comes to the airport. All the other immigration officers, sometimes they have about 15 or 20 of them, they will be looking at him. So after he gets chopped his passport, he will go to every immigration officer and will give to all of them. हरी बोल। प्रभु जी बोल रहे हैं कि गुरु महाराज इतने आकर्षक हैं कि वो जब वहां पर जाते थे वहां पे 15-20 इमिग्रेशन ऑफिसर्स होते थे, वो सब उनको देखते रहते थे और गुरु महाराज का जब स्टैंप लग जाता था, क्लियर हो जाता था, तो गुरु महाराज फिर हर एक इमिग्रेशन ऑफिसर को प्रसाद देते थे। He will not wait somebody to come to look for prasada. He will go, he will go ahead of time and will give the mercy to them. He has so much faith in Mahaprasadam.
गुरु महाराज प्रतीक्षा नहीं करते थे कि कोई उनके पास आएगा और वो उनको प्रसाद देंगे। वो खुद जाते थे और हर एक व्यक्ति को जो उनके सामने होता था उसको वो प्रसाद देते थे। उन्हें बस कृपा बांटनी थी, तो वो हर किसी को कृपा बांट रहे थे। उन्हें महाप्रसाद में अटूट श्रद्धा है गुरु महाराज को। Then inside the airport also, he will look for the sign of the managers, the airport manager, Indian Airlines manager. So he will go inside the offices and will give Mahaprasada to the manager. फिर गुरु महाराज एयरपोर्ट पे देखते थे मैनेजर कहाँ लिखा हुआ है, तो वो देखते थे एयरपोर्ट मैनेजर है या इमिग्रेशन मैनेजर जो भी है, वो उनके ऑफिस में जाकर के उनको प्रसाद दे करके आते थे। जय हो। So like that, everybody knows whenever Srila Jayapataka Swami, our beloved Guru Maharaj, comes to the Calcutta airport, they know that they will receive some Mahaprasada from him. तो अब सबको पता चल गया था कि जब भी हमारे परम प्रिय गुरु महाराज वहां पर आएंगे, जय पताका स्वामी महाराज, तो एयरपोर्ट स्टाफ जानता था कि अब हमें बहुत सारा महाप्रसाद मिलेगा। He also will invite them to come to Mayapur. He always invite people to come to Mayapur Dham. गुरु महाराज उन्हें फिर मायापुर आने के लिए आमंत्रित करते। गुरु महाराज हमेशा सभी को मायापुर आने के लिए आमंत्रित करते रहते हैं। So now I will go back to the early days when I met Guru Maharaj in 1984. तो अब मैं अपने पिछले दिनों का कुछ स्मरण लेना चाहूंगा, जब 1984 में मैं गुरु महाराज से मिला था। I was very new devotee. I was only 3.5 months in the temple. You were only 3. What did you say, Prabhu? I was very new devotee when I met Guru Maharaj. I was, how to say, I was living in the temple for 3.5 months. तो प्रभु जी बता रहे हैं कि मैं तब बहुत नया भक्त था और लगभग 3.5 महीने से मैं मंदिर में ही रह रहा था। In fact, when I joined Krishna conscience, when I saw the devotees, I saw they singing on the street on Harinam, and then when I asked the address of the temple, they gave me the address. So the next day, when I went to the temple for the first time in my life, I went to the temple with my luggage. Actually, it was my first time going to the Hare Krishna temple. प्रभु जी कह रहे हैं कि मैं कृष्ण भावनामृत में कैसे आया। मैंने रास्ते पर सड़क पर भक्तों को हरिनाम संकीर्तन करते हुए देखा, तो मैंने उनसे पूछा आप कहाँ से हैं, तो उन्होंने मंदिर का पता दे दिया मुझे, और मैं अपना लगेज, अपना सामान लेकर के ही मंदिर में गया। So the devotees were very merciful because they allowed me to stay, and they, from the first day I was very much engaged in service, in cooking and pujari until Guru Maharaj came. And what Guru Maharaj service did you get, Prabhu? Okay, on these 3.5 months I live in the temple. Okay, how to say? Okay, the second day I was living in the temple. The second day, I was already chanting 16 rounds because, to live in the temple. The first day I live in the temple, I started chanting 16 rounds. Even I didn't know the mantra actually. I was taught the mantra on that particular day, but on the second day. I was in the temple, I already got service. Okay. तो प्रभु जी बता रहे हैं कि मैं जब वहां गया तो भक्त बड़े कृपालु थे। उन्होंने मुझे पहले दिन ही स्वीकार किया, मंदिर में मुझे रहने दिया, और उन्होंने मुझे पहले दिन से ही सेवाओं में नियुक्त कर लिया। मैं वहां पे कुकिंग, रसोई बनाई प्रभु जी ने, और पुजारी का सेवा भी किया, और पहले दिन ही उन्हें महा मंत्र सिखा दिया गया, और पहले दिन से ही प्रभु जी ने हरे कृष्ण महामंत्र की 16 माला का जाप शुरू कर दिया, और दूसरे दिन से सभी प्रकार की सेवाओं में नियुक्त हो गए। Yes, anyway, yes, from the second day in the temple president sent all the devotees to book distribution.
also the cook of the temple, he was a Brahmana, and he told the cook to teach me. So he teach me to cook in one day only one day. And then my third day in the temple, I already got my service cooking for about 20 devotees alone. No, I have no helper, that at that time, that was the system at that time, तो प्रभु जी बोल रहे हैं कि दूसरे दिन से ही जो टेम्पल प्रेसिडेंट थे उन्होंने मंदिर के सारे भक्तों को पुस्तक वितरण के लिए भेज दिया, बुक डिस्ट्रीब्यूशन के लिए। और जो वहां पे कुक थे, जो वहां पे कुकिंग कर रहे थे, वो ब्राह्मण थे। तो टेम्पल प्रेसिडेंट ने उनसे कहा कि इन्हें थोड़ी कुकिंग सिखा दीजिए। उन्होंने मुझे सिर्फ एक ही दिन में कुकिंग सिखा दी, और उसके बाद से फिर मुझे कुकिंग का सर्विस मिल गया, और मैं लगभग 20 भक्तों के लिए मुझे अकेले सिंगल हैंडेड कुकिंग करनी थी। So 1 week later, he also sent the pujari to book distribution, and I had to do cooking and pujari. Actually, in the pujari, we don't have deities, but we have a big photo of Panchatattva, a very strict worship with 5 offerings a day. तो दूसरे दिन उन्होंने पुजारी को भी बुक डिस्ट्रीब्यूशन में भेज दिया, और मुझे पुजारी सेवा करने का भी अवसर मिला। मुझे पुजारी सेवा भी दे दी गई। यद्यपि वहां पे श्री विग्रह नहीं थे, लेकिन श्री पंचतत्व का एक बड़ा सा चित्रपट था, और वो बहुत स्ट्रिक्ट, काफी कड़े नियमों सहित वहां पर पूजा अर्चना हो रही थी, और दिन में 5 बार पूजा अर्पित की जा रही थी। So, because the temple president see that, anyway, he sees that I was serious doing the services and hearing the classes. When Guru Maharaj came, even I was very new devotee, they recommended me for the first initiation. So I took my first initiation, and that was my beginning of Krishna consciousness. My birth, my spiritual birth from Guru Maharaj, it was in October, the Damodar month, 1984. तो जब उन्होंने मुझे देखा कि मैं पूरी निष्ठा से ये सेवाएं कर रहा हूँ, तो जब गुरु महाराज आए फिर मंदिर में, उन्होंने मेरा परिचय करवाया, और फिर उन्होंने ही मुझे मेरी प्रथम दीक्षा के लिए रेकमेंड भी किया। और वहां से जो वो 1984 का कार्तिक मास था, वहां मेरी दीक्षा हुई गुरु महाराज से 1984 में, प्रथम दीक्षा, हरिनाम दीक्षा। So after my Harinam Diksha was in the city of Guayaquil, Ecuador, the city of Guayaquil. After the initiation, we all went with Guru Maharaj to another city. तो प्रभु जी की जिस शहर में दीक्षा हुई थी उसका नाम था ग्वायाकिल, इक्वाडोर में। और उसके बाद उस शहर में जहां मेरी दीक्षा हुई, उसके बाद हम सभी भक्त गुरु महाराज के साथ दूसरे शहर में गए। That was Guru Maharaj visiting that city for the first time in his life. That city name is Cuenca. ओके, सो वो जो शहर था वो क्वेनका नाम का शहर था, जहाँ पे गुरु महाराज अपने जीवन में पहली बार जा रहे थे। So for the program to introduce Guru Maharaj, we have arranged the city hall of the town, where this is the most prestigious hall in the town. तो गुरु महाराज के इस कार्यक्रम के लिए हमने वहां का जो बहुत ही प्रेस्टिजियस सिटी हॉल था, उस टाउन का, उस शहर का, वो हमने रेंट पे लिया था। So all the very important people from the city, the mayor of the city, the governor, the owner of the newspaper, the main newspapers, a lot of dignitaries from the city, they will come to the program. तो ये इस प्रकार से था कि उस शहर के जितने भी उच्च वर्ग के लोग थे, जैसे कि मीडिया के, प्रेस के, मेयर और दूसरे प्रबुद्ध वर्ग के जो लोग थे, वे सभी उस कार्यक्रम में आने वाले थे। But because it was the Damodar month, Guru Maharaj told us, okay, you please, you arrange lamps for everyone to offer.
But we were wondering because in 1984 we didn't know we can tell someone to offer lamps. In the Damodar program is only for devotees who lives in the temple. तो प्रभु जी बोल रहे हैं, जब हम वहां गए तो वो दामोदर का महीना था और गुरु महाराज ने हमें वहां जाकर के सेवा दी कि ठीक है, आप सभी के लिए दीप अर्पित करने के लिए दीप का आयोजन कीजिए, व्यवस्था कीजिए। तो हम वहां पर सोच रहे थे कि ये कैसे संभव है, क्योंकि तब तो हम केवल मंदिर में हमारे पास दीप होते थे और मंदिर के भक्त वहां पे दामोदर दीपदान किया करते थे। But Guru Maharaj, even at that time, he has so much faith in the congregation. लेकिन गुरु महाराज का उस समय से, तब भी था और अभी भी है, गुरु महाराज को कांग्रीगेशन में, भक्तों में बहुत अधिक निष्ठा है, विश्वास है। You have to understand that in 1984, at that time, ISKCON was different, and someone will be considered devotee if he lives in the temple. If you are living outside the temple, you are like a karmi or non-devotee. They will never. It will not. It was this kind of mentality. आपको समझना पड़ेगा कि इस्कॉन जैसा आज है तब वैसा नहीं था। तब जो व्यक्ति मंदिर के अंदर रहता था केवल उसी को भक्त माना जाता था। मंदिर के बाहर रहने वाले जो थे उन्हें अभक्त या कर्मी व्यक्ति माना जाता था। So sometimes we will call them Krishna's friend, but Krishna friend was not really, even it's a very beautiful word, it's the most wonderful word to be Krishna's friend. To say Krishna's friend was a kind of like, oh, you are a Krishna's friend. It's not really like a meaning you are a devotee. At that time it was this kind of mentality in many places around the world. तो तब हम उन लोगों को प्रभु जी बता रहे हैं कि कृष्ण के मित्र कह के बुलाते थे, हम उन्हें कृष्णास फ्रेंड कहकर बुलाते थे। मतलब आज तो हमें सुनने में अच्छा लगेगा कृष्ण के मित्र, लेकिन तब हमारा मतलब, हम उन्हें ऐसे बताते थे कि अभी आप डिवोटी नहीं हो। And also it was more the mood of being a brahmachari. If somebody will want to marry it, if you marry it at that time, it's like you want to marry it, you fall down. The person will fall down. It's something like that. और उस समय अगर ब्रह्मचारी जिसे मंदिर आना होता था उसे ब्रह्मचारी ही बनना है। अगर उस समय अगर वो व्यक्ति गृहस्थ बनना चाहता है तो वो उसका पतन माना जाता था। But even many people, many devotees around the world think on that way. Guru Maharaj, he never think in that way. He never changed, never ever changed. He always has so much trust in the movement should be spread. So there was some internet problem at your side, Prabhu. So I missed the last few words. Yes, Guru Maharaj always has so much faith in the way the Krishna consciousness movement should be spread. गुरु महाराज, लेकिन चाहे इस प्रकार की भावना थी भक्तों में कि मंदिर में आने वाला जो भक्त है, मंदिर में अंदर रहने वाला वही वास्तव में भक्त है, बाकी सब कृष्ण के मित्र हैं, लेकिन गुरु महाराज ने चीजों को इस तरह से कभी नहीं देखा। तब भी गुरु महाराज इस प्रकार से नहीं देखते थे। उन्हें कृष्ण भावनामृत में बहुत अधिक विश्वास था, निष्ठा थी, और उनका भाव केवल और केवल प्रचार का था कि हर एक व्यक्ति को प्रचार करना है। Anyway, we simply follow what Guru Maharaj says. We arrange lamps for everyone. The city hall was packed with about maybe 600-700 people. That for us, this is a really crowded place. Was full, and he gave a very nice explanation of the Damodar month and the benefits of offering the lamp. तो गुरु महाराज ने हमसे कहा और हमने किसी न किसी प्रकार से दीप की सबके लिए व्यवस्था करी, और फिर वहां पर गुरु महाराज ने सबसे दीपदान करने के लिए कहा।
सब लगभग वहां पे 600 लोग बैठे थे, जो उस समय के लिए एक बड़ा नंबर है। तो वहां पर सभी लोगों ने दीपदान किया और गुरु महाराज ने दामोदर लीला की बहुत सुंदर कथा सुनाई वहां पर। और वहां You पे have, ये बताया कि किस प्रकार से दीप अर्पित करने के क्या आध्यात्मिक लाभ हैं। you have to remember that this kind of cities is not India, you know, this is a West. And in that particular city, the people are very much Christians, you know, and then for them, you know, it is very new thing to hear about Krishna consciousness. तो आप लोग के हमको यहाँ पर सुनने में ये ठीक लग सकता है कि हाँ 600 भक्त आए थे, दामोदर दीपदान हुआ, लेकिन आप सोचिए उस समय वो एक क्रिश्चियन सिटी थी और वहां पर दीपदान करना एक अनोखी बात थी। ये भारत के लिए ठीक है। But the explanation of Guru Maharaj was so sweet that melted everybody's heart, and every single person, the governor, to the simple people, ladies, children, everybody didn't wanted to miss to offer the lamb to Krishna. और लेकिन गुरु महाराज ने इतनी सुंदर लीला सुनाई, दामोदर कथा इतनी सुंदर सुनाई कि ऐसा लगा मानो सबके हृदय पिघल गए। और वहां पे गवर्नर से लेकर सामान्य लोग जो थे, स्त्रियां, बच्चे, हर एक भगवान दामोदर को दीप अर्पित करना चाहता था। Probably that was the first, how to say, a massive public program of Damodar in Latin America that by the blessings of Guru Maharaj. तो संभवतः वो लैटिन अमेरिका का दामोदर कार्यक्रम जो पहला इतना बड़ा दामोदर कार्यक्रम था, इतना बड़ा। So Guru Maharaj, then he went back to India, and then he was supposed to come 3 months later. He couldn't come, but he came about 6 months later or 7. He came back to Ecuador. तो गुरु महाराज उस कार्यक्रम के बाद फिर भारत लौट गए और उन्हें 3 माह के बाद वापस आना था, लेकिन वे नहीं आ पाए 3 महीने बाद। वो 6 या 7 महीने बाद वापस आए इक्वाडोर। At that time, we were maybe about 25 devotees living in the temple, and then we all go to the airport to welcome him with kirtan. तो हम वहां पर लगभग 25 भक्त थे और गुरु महाराज जब आए तो हम एयरपोर्ट पे उन्हें कीर्तन के साथ उनका स्वागत करने के लिए पहुंचे। Even we were a small number, only 25 devotees, but devotees in Ecuador very enthusiastic. The kirtan was like 100 people singing and chanting. तो उस समय हम केवल 25 भक्त थे, लेकिन एयरपोर्ट पे कई भक्त साथ थे हमारे, कई लोगों ने कीर्तन में साथ दिया। तो ऐसा लग रहा था जैसे 100 से ज्यादा लोग उस समय कीर्तन कर रहे थे। So everybody was wondering, oh, who is coming, you know, because we all chanting, and they wanted to know who is actually is the personality who is coming. So we explained to the airport manager that this is our Guruji who is coming, and we asked the permission if we can go to do kirtan on the roof of the airport. And he was very happy, actually. He I don't know whether he was happy or he wanted to get rid of us because it really was like so. But he opened and he let us go to the roof to do the kirtan so we can welcome Guru Maharaj when the plane arrived. तो प्रभु जी बता रहे हैं कि इतना वहां पे शोर हो गया जब हम कीर्तन कर रहे थे, तो सब देखने लग गए कि ये वहां के जो स्टाफ थे, मैनेजर, उन्होंने सोचा कि कौन है ये, कौन आ रहे हैं जो इतना इन्होंने यहाँ पे शोर मचा रखा है। तो हमने उन्हें बताया हमारे गुरु महाराज आ रहे हैं भारत से। तो हमने उनसे रिक्वेस्ट करी कि हमें एयरपोर्ट की छत पे जाके कीर्तन करने दीजिए, क्योंकि हम गुरु महाराज जब उनका प्लेन लैंड कर रहा होगा तब हम उन्हें स्वागत करना चाहते हैं कीर्तन से। तो प्रभु जी बोल रहे हैं कि पता नहीं वो उसने जल्दी से हाँ बोल दी वहां के जो अथॉरिटी थे, क्योंकि शायद वो हमसे छुटकारा पाना चाहते थे। तो हमें Okay. जाने दिया। So what we did, we were chanting and chanting on the roof of the airport for about 45 minutes or 1 hour,
until we can see the plane is already, one devotee already can visualize the plane. And then the moment we saw the plane, the airplane, our ecstasis increased so much more. सो प्रभु जी बोल रहे हैं, एक्चुअली मुझे नहीं मालूम, मेरे आसपास कुछ बम छूट रहे हैं तो मैंने कुछ मिस किया है शायद। आई एम सॉरी डिवोटीज। सो प्रभु जी बोल रहे हैं कि जैसे ही हमने प्लेन देखा गुरु महाराज का आते हुए, आई एम सो सॉरी, बहुत सारे भक्त हम सब कीर्तन कर रहे थे वहां पे रूफ पे जाकर के, और हम गुरु महाराज का उस प्रकार से स्वागत कर रहे थे। इज दैट राइट माता जी? Correct. And then when as the plane was approaching to the airport, we were more happy. And when the plane landed, wow, you see, we jump and jump, we cannot really you cannot imagine the happiness of the devotees to know that the plane of Guru Maharaj landed into the airport. तो जैसे ही हमने एरोप्लेन को देखा, हम और जोर से कीर्तन करने लगे, और जब वो निकट आया तो हमारा उत्साह और बढ़ गया, और जैसे ही वो प्लेन लैंड करने लगा तो हम खूब जोर से गाने लगे और उछलने कूदने लगे। Then you see the plane was driving in front of us, but we cannot see Guru Maharaj, but we thinking maybe he can see us, from the window. So what happened? We singing, and then we see that one of the windows of the plane become orange color. So what happened? Guru Maharaj takes the top piece, the sannyasi cloth, and he covered the window, like this. He covered, तो with the orange color, and then we can actually see, wow, Guru Maharaj is there, हरी हरी आशा है आप सब समझ गए होंगे। बहुत ही सुंदर लीला बताई प्रभु जी ने कि गुरु महाराज, हम जब शोर मचा रहे थे, हम कीर्तन कर रहे थे, तो हमें नहीं लगा कि गुरु महाराज देख रहे होंगे हम कीर्तन कर रहे हैं। हम खुश हो रहे थे गुरु महाराज का प्लेन लैंड होता हुआ देख के, और हम कीर्तन कर रहे थे। लेकिन तभी अचानक से एरोप्लेन की एक खिड़की केसरिया रंग की हो गई, और हमें समझ में आया कि गुरु महाराज ने अपनी चादर से उसको ढका है, और हम समझ गए कि गुरु महाराज ने हमें देख लिया है। जय हो। So when we see Guru Maharaj reciprocating with us, again, the happiness and the way we can jump even 1.5 meter high, from the ground, because we can feel, how Guru Maharaj is so merciful. He can reciprocate with us, and he will put the cloth and take out. We'll put the cloth like this, and we'll take out again. We'll put the clothes like that, no? And then he was Amazing. just like this, reciprocating with us. अमेजिंग अमेजिंग। प्रभु जी कह रहे हैं कि जैसे जैसे लैंड कर रहा था, प्लेन निकट आ रहा था, हमारा कीर्तन बढ़ गया, हम और जोर जोर से कूदने लगे, और गुरु महाराज अपनी चादर से बार बार उसको, खिड़की को ढक देते, फिर हटा देते, फिर ढक देते, फिर हटा देते। वो निरंतर भक्तों के साथ इतने कृपालु हैं गुरु महाराज, वो हमारा उत्साह देकर वो निरंतर आदान प्रदान कर रहे थे। So we will wait until the plane stop and all the passengers come down. In this kind of airport, you don't go direct to the airport. We can see the passengers coming down, and then we chanting until we cannot see Guru Maharaj anymore. The moment we don't see anymore, then we all run and we going downstairs, to the actual airport to do kirtan until he come out. तो प्रभु जी कह रहे हैं कि जैसे ही प्लेन लैंड किया, तब तक हम कीर्तन कर रहे थे टेरेस पर ही, लेकिन जैसे ही प्लेन लैंड किया, फिर हमें गुरु महाराज दिखने बंद हो गए, और हम समझ गए कि प्लेन नीचे आ गया है, और फिर हम वो जो एक्चुअल एयरपोर्ट है, हम नीचे की तरफ वापस भागे कीर्तन करते हुए गुरु महाराज का स्वागत करने के लिए। Anyway, by the time he came out, so many people also want to know who is him. And whenever Guru Maharaj comes out, the first thing he normally asks, where is the Mahaprasada? So we're supposed to have some Mahaprasada for him to distribute.
तो गुरु महाराज जब वहां पर आ गए तो सब लोगों को लग रहा था ये कौन आए हैं जो इतना ज्यादा जिनका स्वागत हो रहा है। तो खैर गुरु महाराज जब आ गए वहां पर, तो हम सबको पता है कि गुरु महाराज सबसे पहले आकर पूछते हैं कि महाप्रसाद कहाँ है, क्योंकि हर कोई जानता है कि गुरु महाराज को वहां पे महाप्रसाद वितरित करना होता है। So we gave him the cookies, and then he gave cookies. Everyone coming for cookies, even the people pushing the trolleys, the visitors, people working in the airport, everyone coming to take Mahaprasada from Guru Maharaj. तो हम कुछ कुकीज लेकर आए थे गुरु महाराज के लिए, प्रसाद वितरित करने के लिए। तो गुरु महाराज वहां पे प्रसाद देने लग गए और सब गुरु महाराज की तरफ जा रहे थे प्रसाद लेने के लिए। वहां पे जो ट्रॉली पुश करने वाले थे, स्टाफ जो था, जितने भी लोग थे, विजिटर्स जो एयरपोर्ट पे आए हुए थे रिसीव करने के लिए, वो भी सब गुरु महाराज के पास जा रहे थे। Anyway, just I am telling you all this so you know what is the mood of Guru Maharaj when he travels out of India, you know, and he giving so much mercy for us in Latin America. मेरा ये सब बताने की मंशा ये है कि आप गुरु महाराज का भाव समझें कि वो जब निकलते हैं भारत से, तो बाहर उनको सिर्फ कृपा वितरित करनी होती है। विशेषकर भारत के बाहर वो महाप्रसाद इसलिए वितरित करते हैं ताकि सभी को वो कृपा प्राप्त हो। Anyway, maybe I will tell. What can I? Okay, maybe I will tell maybe 2 or 3 small pastimes in South Latin America, and then I will continue with India. तो ठीक है, मैं आपसे अब कुछ और लीलाएं लैटिन अमेरिका की बताऊंगा और उसके बाद फिर मैं भारत की बात करूंगा। One time we buy a land by the beach, beautiful land actually. So we go driving to Guru Maharaj to the land to bless the place and to give us some directions about this land. And I got the fortune to be driving for Guru Maharaj. एक बार हमने वहां पर एक बहुत सुंदर जमीन का टुकड़ा लिया था, बहुत ही सुंदर जगह थी वो, और वहां पे हम गुरु महाराज को ड्राइव करके लेके गए ताकि वो उस जगह को अपना आशीर्वाद दें और हमें उसके बारे में अपनी कुछ राय दे, कुछ परामर्श दे कि हम किस प्रकार से उसका उपयोग करें। और मैं हमेशा गुरु महाराज की कार ड्राइव करता था। So by that time we already have built a small house, a small hut without cement and bricks. It was like a Indian village style with bamboo. हाँ, तब तक हमने उस जमीन के टुकड़े पर एक छोटी सी झोपड़ी जैसी बना ली थी जिसमें ईंट और सीमेंट नहीं लगा था। आप यूं समझ सकते हैं जैसे भारत में गांव में जो झोपड़ी होती है उस प्रकार से, बैम्बू की, बांस की। So we have a small, like a big hall on on the first floor is only one ground floor and one floor. On the first floor we have a hall where we welcome Guru Maharaj with the Pada Puja and with the Guru Puja. We did the Guru Puja for Guru Maharaj. तो उसमें हमने छोटा सा एक ग्राउंड फ्लोर था और फर्स्ट फ्लोर भी था, तो वहां पे हमने गुरु महाराज का स्वागत किया पाद पूजा और गुरु पूजा के साथ। So when we going to start doing the Arctic, Guru Maharaj asking, where is the Mahaprasadam? And then we tell Guru Maharaj, because we just arrived in the farm. Nobody lives in the farm actually. We say we don't have time to do we don't have any cookies. जैसे ही हमने आरती शुरू करी, गुरु महाराज ने कहा महाप्रसाद कहाँ है। तो हमने गुरु महाराज को बुलाया, बोला कि हम अभी आए ही हैं यहाँ पर गुरु महाराज, और यहाँ पर ऐसी व्यवस्था नहीं है, अभी हमारे पास कोई कुकीज या कोई महाप्रसाद नहीं है। So Guru Maharaj, from the place he's sitting, he see all the trees and the land, and he can see one banana tree which have all ripe bananas, and he say, "Oh, what's about those ripe bananas?" He says. जय। तो गुरु महाराज वहां बैठ के बोलते हैं
कि ठीक है, बहुत दूर तक उन्होंने नजर फेंकी और उन्होंने कहा कि वहां पर एक पेड़ है जिसके सारे के सारे केले, केले का पेड़ है जो सारे केले पके हुए हैं। उनके बारे में आपका क्या ख्याल है? At that time, actually, we are all very new devotees. We do not know we can give him bananas for distribution. We only thinking Guru Puja, Cookies. only cookies, or simply wonderful, like those kind of, how to say, Mahaprasada sweets, like that. या तो प्रभु जी कह रहे हैं कि हमें नहीं पता था कि महाप्रसाद के लिए गुरु महाराज केले भी वितरित कर सकते हैं। हम नए भक्त थे, हमें लगा कि अगर महाप्रसाद डिस्ट्रीब्यूट करना है गुरु महाराज को तो या तो वो कुकीज हो सकती हैं या वो सिंपली वंडरफुल लड्डू जो हम बनाते थे। So Guru Maharaj is teaching us, no, anything you offer to the Lord can be distributed. So one devotee, his name is Seva Swarup Prabhu. He quickly go within 2-3 minutes. He bring the big, bunch बन of bananas in front of him for him to, to ऑफर। distribute. तो प्रभु जी बोल रहे हैं कि उस समय गुरु महाराज ने हमें सिखाया कि नहीं, भगवान की सेवा में हम कुछ भी अच्छा प्रसाद इस प्रकार का भोग लगा के और वितरित कर सकते हैं, बनाना भी कर सकते हैं। तो सेवा स्वरूप प्रभु उस समय थे, भक्त हमारे संग एक, और वो तुरंत भाग कर गए और 2 या 3 मिनट के अंदर अंदर वो वहां से पके हुए केलों का एक बड़ा सा गुच्छा तोड़ करके लेके आए। Yes. So he peel up one banana. He offered. After he offered, he eat, little bit, and after eating, he showed half of the banana like this on his hand, like showing to see who wants, this Mahaprasad. He was saying this with the body sign. तो गुरु महाराज ने उनमें से एक पका हुआ केला निकाला, उसको छीला, भगवान को अर्पित किया और फिर खुद ने आधा केला उसमें से खाया। और उसके बाद आधा केला ऐसे लेकर के सबको दिखाते हैं इस भाव से कि ये किसको चाहिए। So like this, everybody, of course, all the Matajis wanted, the men they wanted, but anyway, he just threw it and one devotee catch it. कैसे? So then again, he took another banana, he ate one bite, and he threw one first to the men, and then the other one he threw to the Matajis. गुरु महाराज ने वो बनाना पूछा किसको चाहिए, तो सारी स्त्रियां जो माता जी थी, जो प्रभु जी थे, उन्होंने कहा हमें चाहिए, हमें चाहिए। तो गुरु महाराज ने एक किसी को दिया नहीं, उन्होंने वो जो आधा बनाना था ऐसे ही उछाल दिया। उनमें से एक भक्त ने वो ले भी लिया और उसके बाद गुरु महाराज ने दूसरा बनाना उठाया, उसमें से एक बाइट खाया और उसको माता जी की तरफ उछाला, फिर बनाना उठाया, फिर से प्रभु जी की तरफ उछाला और इस तरह से वो करते रहे। So like this, he finished the whole bunch of bananas. Every Oh. one of us, we got a maha banana from Guru ओ Maharaj. जय हो, जय हो। इस प्रकार से गुरु महाराज ने वो पूरा केले का जो गुच्छा था उसमें से एक एक केला तोड़ के एक एक ग्रास खा के और सब लोगों में वितरित कर दिया। प्रभु जी बोल रहे हैं वहां के हर एक भक्त को वो महाप्रसाद मिला गुरु महाराज से। जय। Anyway, then we went for a Japa walk to the beach. We had to walk from there for about 2 kilometers, and then he saw in the beach there were two small islands, like rocks, two small islands standing in front of the ocean, by the ocean. And then when he saw these two islands, he remembered Nitai Gauranga. ऑलवेज। सो गुरु महाराज वहां से हम लोग फिर बीच की तरफ वॉक करने के लिए गए। लगभग 2 किलोमीटर दूर था वहां से। और जब हम वहां गए तो वहां पे बीच में वो जो समुद्र तट था, वहां पे उनके बीचों बीच दो द्वीप जैसे चट्टाने थी दो, और उनको देख के गुरु महाराज को गौर निताई का स्मरण हो आया। So when he saw the two islands, they say Nitai Gauranga. So he gave the name of this land, this project, as New Mayapur. जय जय। तो जब उन्होंने वो दो चट्टाने देखी तो उन्होंने कहा निताई गौरांग,
और फिर ये जो नया प्रोजेक्ट था जो हम जिसके लिए गुरु महाराज का आशीर्वाद लेने के लिए उन्हें लाए थे, उन्होंने उस प्रोजेक्ट का नाम न्यू मायापुर रखा। Anyway, I was there in Mayapur. I was there in Ecuador, living there for about for a few years. And 1989, it was my first time coming to Mayapur. I came here for the Mayapur festival. तो मैं इक्वाडोर में भी था और मैं फिर मायापुर में भी था, और मैं पहली बार मायापुर आया था एक उत्सव के लिए। For me, even was my first time coming to Mayapur. My main, how to say, focus or my main objective coming, I wanted to get as much association as I can from Guru Maharaj. प्रभु जी बोल रहे हैं कि मैं मायापुर आया तो उत्सव में था, लेकिन जब मैं आया था, प्रथम बार भी आया था, तो मेरा लक्ष्य सिर्फ ज्यादा से ज्यादा गुरु महाराज का संग प्राप्त करना था। So whenever Guru Maharaj goes out or in, I will follow. I just will follow him in case they give me some service, not to carry the umbrella or to do any service. I will be ready to do. I will follow any time of the day. गुरु महाराज अंदर जाते चाहे बाहर आते, मैं उनके पीछे पीछे जाता था और उनका हमेशा मैं उनको फॉलो करता था। मैं ये देखता था कि किसी न किसी प्रकार से गुरु महाराज की कोई सेवा मुझे प्राप्त हो जाए, छाता पकड़ने की सेवा प्राप्त हो जाए या कोई और सेवा, तो बस मैं कोई भी छोटी मोटी सेवा गुरु महाराज की करता रहता था। I cannot speak English, not even one word, no English, but Guru Maharaj will talk to me in Spanish. He learned Spanish very good. He can speak and give lectures in Spanish language. तो मुझे अंग्रेजी बिल्कुल नहीं आती थी, एक शब्द भी नहीं आता था, लेकिन गुरु महाराज ने मुझसे स्पेनिश में बात करी और उन्हें स्पेनिश अच्छी तरह आती थी, यहाँ तक कि वो स्पेनिश में कक्षाएं भी देते थे। From that particular time, I will mention two pastimes which I can remember on this year. Well, I remember some more, but I will mention two. One is on the Vyasa Puja day. On the Vyasa Puja day, Guru Maharaj, there were some devotee from Bengal singing. And then he called me to the Vyasa Center. तो मैं आपको इस विशेष समय की, जब मैं मायापुर में था, दो लीलाएं बताता हूँ। कुछ और भी हैं लेकिन अभी मैं दो बताता हूँ। तो ये तब की बात है जब गुरु महाराज की व्यास पूजा थी और मैं वहां पर था और बंगाल के एक भक्त उस समय कुछ गा रहे थे। So he comments to me, he said, oh, he said, Marici das. He will normally will tell me das, no, always Marici das. He said, the kirtan, it was a little boring, how to say, what was, like a very slow. He said he wanted a bit more enlightened kirtan. And he asked me, why you don't sing? तो वो जो भक्त थे वो मुझे देखे और मुझे बोला, मरीचि दास, मरीचि। तो मुझे एक्चुअली वो जो वास्तव में वो जो कीर्तन था वो काफी डल और स्लो था, इतना उत्साही नहीं था। तो उन्होंने मुझसे कहा, मरीचि तुम क्यों नहीं गाते हो? But you see, when Guru Maharaj asking something, we don't think twice, no? I say, whatever he asks, always, yes, Guru Maharaj, yes. But the moment I say yes and I left, I thinking, why Guru Maharaj asked me to sing? I am not even a good singer. I don't know how to sing so nice. I was very confused. तो जब गुरु महाराज ने बोला प्रभु जी से, तो प्रभु जी ने कंफ्यूज हो गए। उन्होंने कहा, मुझे तो गाना भी नहीं आता है। मैंने तो, गुरु महाराज हमें अगर कोई सेवा देंगे तो हम तुरंत बोलेंगे, जी गुरु महाराज, जी गुरु महाराज, मैं गाता हूँ। लेकिन मैंने बाद में सोचा, मुझे गाने के लिए क्यों कहा गया, मुझे तो गाना आता ही नहीं है।
but because he told me like this, and I think well, he wants this, I just go next to the devotee holding the mic. No, it was one Bengali devotee singing, and a few meters in front, it was another Bengali devotee with another mic repeating. In Bengal sometimes they use two mics for the kirtan. No? Yes. So I was standing next to him, but I don't know English also. I don't know how to tell him that Guru Maharaj wants me to sing. तो प्रभु जी गए उन बंगाली डिवोटी के पास और वो गा रहे थे, दूसरे बंगाली डिवोटी थोड़ा दूर अनुशीलन कर रहे थे। तो प्रभु जी जाकर के उस गाने वाले बंगाली डिवोटी के पास खड़े हो गए। उन्हें अंग्रेजी भी नहीं आती थी। वो कह रहे हैं कि मुझे समझ नहीं आ रहा था, मैं उससे कैसे बोलूं कि मुझे गाने दो। So you know that it's so difficult to take the mic from the Bengali devotees. They are too attached to the mic. And then I also didn't know how to do. So I wait and wait and wait for about maybe 5 minutes until it was a moment that he paused in one moment. And I say, okay, this is my chance, आई एम सॉरी, आई एम सो सॉरी। तो प्रभु जी बता रहे हैं कि मैं वहां पर खड़ा रहा काफी देर, 5 मिनट तक मैंने प्रतीक्षा करी कि मुझे किसी प्रकार से बोलने का अवसर मिले, लेकिन वो गा रहे थे। लेकिन बीच में उन्होंने एक छोटा सा पॉज लिया, और जैसे ही उन्होंने पॉज लिया तो मुझे समझ आ गया कि ये मेरा अवसर है अभी माइक लेने का। So then I quickly took the mic because I cannot ask him. I told him in Spanish, no, Prabhu, Guru Maharaj want me to sing. And I quickly took the mic and I started singing very quickly, because it was the only chance. Otherwise, I don't know how I can get the mic, प्रभु जी ने जैसे ही उन्होंने छोटा सा एक पॉज लिया तो प्रभु जी ने उनसे माइक ले लिया। अंग्रेजी बोलने नहीं आ रही थी, स्पेनिश में बोला उनसे कि प्रभु प्रभु रुकिए, गुरु महाराज चाहते हैं कि मैं गाऊं, मुझे माइक दीजिए। और प्रभु जी ने गाना शुरू कर दिया। जय। So after I finished singing the first, Hare Krishna or something, devotees supposed to repeat, but everybody was looking at me, very few repeat. I was feeling so embarrassed, so many eyes looking at me. I was really feeling very, very embarrassed. प्रभु जी बोल रहे हैं कि मैं गाने लग गया, लेकिन जैसे ही मैंने हरे कृष्ण महामंत्र गाना शुरू किया तो बहुत ज्यादा भक्त मेरे पीछे अनुशीलन नहीं कर रहे थे। मैं गा रहा था लेकिन फिर कोरस नहीं आ रहा था पीछे से। मुझे बड़ी शर्मिंदगी हो रही थी। And then I try again to improve 2 or 3 times to sing, but even was getting worse until I have to look for the devotee who was singing. I call him and I give him by the mic. Prabhu, I said, Prabhu, you please sing. I said. अमेजिंग। प्रभु जी बोल रहे हैं मैंने 2-3 बार गाया, लेकिन कुछ अनुशीलन नहीं था, कुछ अच्छा नहीं हो रहा था, तो मुझे बहुत शर्मिंदगी हो रही थी। फिर मैंने थोड़ी देर बाद थोड़ा राग बदल के थोड़ा और इम्प्रूव करने के लिए गाया, लेकिन कोई खास अंतर नहीं पड़ा। तो फिर मैंने उसी भक्त को वापस बुलाया कि जो गा रहे थे कि आप आओ प्रभु, आप ही गाओ। For me, it was very, very embarrassing. And in the night, when Guru Maharaj was inside the room, I told him what happened, And when he heard the story, he was laughing and laughing. He was very happy he did all this. अमेजिंग, वेरी स्वीट। प्रभु जी बोल रहे हैं फिर मैं रात को गुरु महाराज के पास गया और मैंने उनको बताया कि वहां पर क्या हुआ मेरे साथ। तो जब गुरु महाराज ने ये सब सुना तो वो बहुत हंस रहे थे। Maybe Guru Maharaj was testing me or something, I don't know, but I took this like his blessings, his mercy. नेचुरली। प्रभु जी बोल रहे हैं कि मुझे गाना नहीं आता था, लेकिन गुरु महाराज ने कहा इसलिए मैं चला गया। ये गुरु महाराज को इस चीज ने बहुत प्रसन्नता दी, और हो सकता है कि ये गुरु महाराज की कृपा प्राप्त करने का मेरा अवसर था, जो कि निश्चित रूप से उन्हें मिली। Also, on the Vyasa Puja day, there were initiations. The how to say the evening before there were initiations. There were initiations introduced.
on the Lotus building where is the residence of Guru Maharaj. And there were so many people there waiting for interview. Maybe, I don't know, maybe 100 people they were there. Even that time. तो उस समय व्यास पूछा कि एक दिन पहले अधिवास के दिन गुरु महाराज से दीक्षा लेने वाले कई सारे भक्तों के इंटरव्यू थे लोटस बिल्डिंग में. So Guru Maharaj was sitting in his office. The office of Guru Maharaj is the same room that he's giving classes now. That was the office of Guru Maharaj. गुरु महाराज उस समय अपने ऑफिस में थे और गुरु महाराज का ऑफिस वही था जो आज गुरु महाराज जहाँ पे कक्षा लेते हैं वही गुरु महाराज का ऑफिस हुआ करता था और बाहर लगभग 100 भक्त दीक्षा के लिए बैठे थे. The Lotus building will have two identical rooms. One was his bedroom and the other one was his darshan room. ओके. लोटस बिल्डिंग में एक जैसे 2 कमरे हैं जो एक गुरु महाराज का शयन का कक्ष होता था और दूसरा दर्शन का कक्ष होता था. So certainly in the interview sometimes the servant will give some little prasadam to Guru Maharaj and he will eat some fruits or something during the interview. But certainly Guru Maharaj says, what is Marici Das? He asked him. तो गुरु महाराज जब इंटरव्यू लेते थे उस समय तो जो उनके सर्विटर्स हैं वो उनको कुछ प्रसाद देते थे, कुछ फल वगैरह इस तरह से अल्पाहार. लेकिन गुरु महाराज बीच में हमेशा पूछते थे मरीचि कहाँ पर है. So the servant go outside and ask everybody getting initiated there, asking Marici Das, everybody talking, but nobody know who is Marici Das actually, because I nobody know me actually, but my first time in India. तो जब उनसे पूछा गया कि मरीचि कहाँ पर है तो भक्त गए बाहर पूछने के लिए मरीचि दास, सब एक दूसरे से पूछ रहे मरीचि दास कहाँ पर है, मरीचि दास कहाँ पर है, लेकिन कोई नहीं जानता कि मरीचि दास कौन है क्योंकि कोई मुझे जानता नहीं था. मेरा वो प्रथम बार आना हुआ था भारत में. So finally one person in the roof, so I know who is Marici Das, but he's not here. So he go to Guru Maharaj's room and he say, oh, Guru Maharaj, I know who is Marici Das, but he's not here in the roof. ओके. तो उनमें से एक भक्त थे जो मुझे पहचानते थे. उन्होंने कहा हाँ मैं जानता हूँ मरीचि दास को, मैं जानता हूँ, लेकिन गुरु महाराज वो यहाँ पर अभी इस समय इस छत पर नहीं है. So Guru Maharaj has one packet, one bag, let me see, I don't have a bag here, no? So in the bag, he said, okay, this bag is for Marici Das, but you have to give him urgently, he said, So the devotee was very alert. He said, Guru Maharaj telling him like this. So he was running all over Mayapur looking for me. And he ran everywhere. Finally, after almost half an hour, 45 minutes, he find me sitting in the Govinda restaurant. I was there eating some samosas. गुरु महाराज ने वो बैग दिया, बोला ये मरीचि के लिए है. तो जो भक्त थे और उनसे कहा उन्हें जल्दी पहुंचाओ. तो जैसे ही वो जो भक्त थे वो लेके भागे मुझे ढूंढने के लिए और शायद वो आधा घंटा या 40 मिनट तक मुझे ढूंढ रहे थे और मैं गोविंदा रेस्टोरेंट में बैठ करके समोसा खा रहा था. So he said, oh, Prabhu, I coming from the Guru Maharaj quarter. This is the bag, Prabhu, please. Guru Maharaj sent, he said, it's urgent, Prabhu, to give it to you. So I take the bag and I open inside, it was a bag, it was a pot. When I opened the pot, what it was inside, it was ice cream. हरी बोल. So someone have given him ice cream, he ate, and then this was a Mahaprasad ice cream, and then I don't know, anyway. That's why he wanted him That's why to he find wanted food. urgent, not to melt, actually. Melt, That was yeah. why it was urgent. Yeah. तो वो बैग लेके वो जो प्रभु आए उन्होंने बोला गुरु महाराज के क्वार्टर से आया हूँ, ये आपके लिए है, जल्दी देखिए, खोलिए इसमें क्या है. गुरु महाराज ने जल्दी पहुंचाने को कहा है. तो जैसे ही मैंने वो बैग लिया उसके अंदर से एक टिफिन पॉट सा निकला और जब मैंने उसको खोला तो उसके अंदर आइसक्रीम थी
और आइसक्रीम को देख करके हमें समझ में आया कि गुरु महाराज क्यों चाहते थे कि मैं जल्दी मिल जाऊं ताकि आइसक्रीम मेल्ट ना हो जाए। So I was thinking, I was reflecting, no? You see, you know, such insignificant soul, here, then, like how Guru Maharaj have, can have this personal touch, some personal touch to me. But uh, what I have seen actually, Guru Maharaj always has this kind of personal touch with people, always. It's not like it was because me. I mean, I can see this mood of Guru Maharaj having this personal touch. मैं सोच रहा था कि मैं कितना इंसिग्निफिकेंट हूँ, कितना नगण्य हूँ, और गुरु महाराज कितने महान हैं, लेकिन ये जो पर्सनल टच है हर एक भक्त के संग, ना सिर्फ मेरे संग, मैं आज भी देखता हूँ कि गुरु महाराज का ये जो व्यक्तिगत आदान प्रदान है भक्तों के संग, वो आज भी वैसा ही है। So, anyway, I this is my first time I came to India, and I had such a great association with Guru Maharaj. तो ऐसा था मेरा प्रथम बार बाहर भारत आना, और गुरु महाराज के साथ मेरा प्रथम बार जो संग था, जो एसोसिएशन था मेरा गुरु महाराज के साथ, वो ऐसा था। On that particular year, Guru Maharaj, before Gaura Purnima festival, asked me if I bring my driving license, because he know I drive, and I used to drive for him in South America. तो गुरु महाराज ने मुझसे पूछा कि आपके पास वहां पर ड्राइविंग लाइसेंस जो है, क्या वो आप भारत लेकर आए हैं, क्योंकि मैं वहां पर भी गुरु महाराज के लिए ड्राइव करता था। I very surprised why he asked me this, but I do have my license. And he tell, oh, because we have a bus in Bangladesh, in Dhaka, and I want to take some devotees to visit the holy places of the Association of Lord Chaitanya Mahaprabhu. And then maybe, we can use this bus. You can go to Dhaka, bring the bus to the Bangladesh-Indian border, and I will come with a group of devotees, and we can visit holy places. जय। तो मुझे बहुत आश्चर्य हुआ कि गुरु महाराज क्यों पूछ रहे हैं मुझसे ड्राइविंग लाइसेंस के लिए, लेकिन मैंने उनसे कहा कि हाँ मेरे पास है लाइसेंस। गुरु महाराज ने कहा ये तो बहुत अच्छी बात है, तो हो सकता है कि आप बंगाल चले जाएं, ढाका, हमारी एक बस है, और हम चाहते हैं कि भक्त लोग वहां पर गुरु महाराज चैतन्य महाप्रभु व उनके पार्षदों के जो लीला स्थलियां हैं वहां पर जाकर के भक्त लोग जाएं। तो हो सकता है कि आप वो बस ले आए और फिर मैं भक्तों के साथ उसमें आ जाऊंगा। And then Guru Maharaj sent me, he said him okay, the same thing, Guru Maharaj asking, we say okay. And then after Gora Purnima, immediately after, he make a note for me for the devotees from Dhaka, and then to give me the bus, and then I went to Dhaka, and I bring the bus to the border of Bangladesh, India. तो जैसे ही मैंने कहा हाँ ठीक है गुरु महाराज, गुरु महाराज ने तुरंत वहां के भक्तों के लिए एक नोट लिखा, मुझे दिया, बोला आप जाएं और बस लेकर के जाएं, वहां से ढाका के भक्तों को लेके आए, आप उन्हें लाएंगे, फिर हम यहाँ से, मैं भी उसमें आ जाऊंगा, फिर हम यहाँ से लीला स्थलियां को देखने चलेंगे। Of course, Guru Maharaj was concerned because I cannot speak English. This is my first time in my life I driving on the left side of the road. I never drive on the left side of the road. And also driving a bus in Bangladesh is not easy. So before I left Mayapur, he gave me 2 advices. यद्यपि गुरु महाराज मुझे भेज रहे थे, लेकिन वो थोड़ा सा उनको ऐसा भी था क्योंकि मैं पहली बार भारत में ड्राइव कर रहा था, और मैंने जीवन में पहली बार सड़क के बाईं तरफ ड्राइव करा था, तो वहां से निकलने से पहले गुरु महाराज ने मुझे 2 परामर्श दिए।
So the first advice he tell me, you know, in Bangladesh, you can drive without brakes, but you cannot drive without horn. What? That's what Yeah, he told me. I really cannot understand the meaning of this until I was driving in Bangladesh. on the How road, yeah. organized the horn. Yeah. तो प्रभु जी बता रहे हैं गुरु महाराज ने जो मुझे पहला परामर्श दिया वो ये था कि बांग्लादेश में आप बिना ब्रेक की गाड़ी तो ड्राइव कर सकते हैं, लेकिन बिना हॉर्न की गाड़ी आप ड्राइव नहीं कर सकते। तो मुझे ये बात बिल्कुल समझ में नहीं आई तब तक, जब तक कि मैं बांग्लादेश की सड़कों पे गाड़ी चला नहीं रहा था। And the other advice he tell me, just be careful when you drive, because if by any chance any accident and you know you hit someone and it happens somebody get killed by the accident, you know, in this kind of countries like Bangladesh, they will not take you to the police like this. They the local villagers, they very often they kill the driver. So just be careful. हम्म। तो उन्होंने प्रभु जी को जो दूसरा परामर्श दिया वो ये था कि आप पहली बार चला रहे हैं, लेकिन आप बहुत अधिक ध्यान रखिएगा, क्योंकि यहाँ पर अगर कोई दुर्घटना घटती है या जाने अनजाने आपसे किसी की हत्या हो जाती है, एक्सीडेंट हो जाता है, तो यहाँ पर जो बांग्लादेशी लोग हैं वो ड्राइवर को पुलिस में नहीं देते हैं, वो उसको खुद ही मार देते हैं। So that's why when I was driving in Bangladesh, all the devotees going dhoti, sari, but now when I drive, I make sure that I have pants and also shoes, you know, because in case of any accident, I couldn't imagine myself running to the rice field with the dhoti, you know, very difficult to run with the dhoti, almost impossible, you know. But by Krishna's mercy, Guru Maharaj's mercy, was no accident. For 3 weeks, everything was very good. गुरु महाराज की जो दूसरी एडवाइस थी उसके चलते मैंने इतना तो ध्यान किया कि पीछे जो भक्त बैठे थे वो सब धोती में थे, लेकिन मैं पैंट पहनता था, ड्राइव करते समय शूज पहनता था, क्योंकि मुझे लगा अगर कोई दुर्घटना हो गई तो मुझे भागना पड़ेगा और मैं धोती में नहीं भाग सकता। अमेजिंग। Anyway, you know, that was my first visit to India. I came back to Ecuador, and 2 years later, in 1991, I came to live in Mayapur Dham. हरी बोल। ठीक है, जब मैं पहली बार भारत आया उसके बाद मैं कुछ समय यहाँ रह करके वापस इक्वाडोर लौट गया, लेकिन उसके 2 साल के बाद मैं फिर से भारत आया हमेशा के लिए मायापुर में रहने के लिए। So I was a servant of Guru Maharaj, and 2 years later, they request me to be his secretary. In 1993, I had a service also to be his secretary to arrange his travelings and itinerary all over the world, India and all over the world. जय। फिर जब मैं लौट कर आया तो मैं गुरु महाराज का सर्वेंट बना यहाँ पर आकर के, और कुछ समय बाद उन्होंने मुझे गुरु महाराज का सेक्रेटरी नियुक्त किया, और मैं गुरु महाराज का ट्रैवल यात्रा का जो सारा कार्यक्रम था, उनका सारा जो प्रोग्राम होता था, वो सब कुछ नेशनल इंटरनेशनल देश में भी और देश के बाहर भी जो यात्राएं होती थी वो मैं देखा करता था। Yeah, we used to, especially this secretary service of arranging his travelings, we used to do together with His Grace Bhadrabalaram Prabhu, who is a very dear God brother to us. और यात्राओं का सारा जो व्यवस्था थी वो मैं और भद्र बलराम प्रभु देखा करते थे, जो कि हमारे वरिष्ठ गुरु भाई हैं। Anyway, Guru Maharaj was happy with the service of the ticket arrangements. Many times told me, "Oh, Marici does. If you want to open a travel agency, you can be a millionaire," he says. But I say, "No, Guru Maharaj, I prefer to do the tickets only for you, Guru Maharaj. I don't want to have a travel agency." तो गुरु महाराज प्रभु की सर्विस से बहुत ज्यादा प्रसन्न थे, वो टिकट्स वगैरह सब समय पर करते थे उनके लिए। तो गुरु महाराज उनको कहते थे कि ओ मरीचि दास, अगर आप ट्रैवल एजेंट बन जाएं तो आप तो करोड़पति बन जाएंगे, लखपति बन जाएंगे। तो मैं उन्हें कहता था कि नहीं गुरु महाराज, मैं बस आपके लिए टिकट बुक करके ही प्रसन्न हूँ।
Anyway, you see, I am so happy to see now so many of my god brothers and god sisters online. And I believe they are all of you are from the area of Maharashtra, means Mumbai area, or maybe some of them nearby places. प्रभु बोल रहे हैं कि मैं इतने सारे अपने गुरु भाई बहनों को देख करके बहुत प्रसन्न हो रहा हूँ, और मेरा ये अनुमान है कि आप में से ज्यादातर भक्त जो हैं वो महाराष्ट्र के आसपास से हैं। Because the time is almost over, I also want to give some time for devotees may want to, to ask some questions. You feel free, feel free to ask questions or some comments. तो मुझे लगता है कि अब समय हो चला है और मैं चाहता हूं कि भक्त कुछ प्रश्न पूछें। आप लोग निश्चिंत होकर के जो चाहें वो पूछ सकते हैं। I don't know what is the system because it's the first time I participate in this GSS program, but I understand that you've been meeting started since the COVID time and have not stopped, no? Which is also very good because it's very nice to get association among God brothers and God sisters and hear the glories of our beloved Guru Maharaj. मैं पहली बार आया हूँ यहाँ पे जेएसएस प्रोग्राम में। मुझे लगता है शायद आप लोगों ने कोरोना के समय से ये आरंभ किया होगा और तब से ही अब तक रुका नहीं है, और ये बहुत अच्छी बात है क्योंकि गुरु भाई बहनों के बीच में इस प्रकार का संग व आदान प्रदान बहुत जरूरी है, और विशेष करके जब हम सब मिलकर के अपने प्रिय गुरु महाराज की महिमा का गुणगान करें तो ये बहुत अच्छा है। So any question? I don't know what is the system actually. You can tell me. Thank you. Hare Krishna, Marici Prabhu ki jai. Satyabama Mataji ki jai. So actually very, very, very interesting, Prabhu. I mean, we enjoyed every second of the various pastimes of our dear Srila Guru Maharaj with you. I mean, it's wonderful. I've actually posted the link in our group saying any of you missed the session, please watch it on YouTube. Very hilarious, very emotional, very touching. I mean, I'm at loss of words. Very wonderful session, Prabhu. Thank you so much. There are also floods of messages on the chat box where devotees are saying thank you for the lively sharing, Prabhuji, feeling blissful, Prabhuji. Thank you so much for wonderful session, Prabhuji, wonderful nectar, Prabhuji. Dandavat pranams, very interesting, Prabhuji, enjoying your conversation. So like that, there are so many messages in the group. Everyone is so overwhelmed with hearing all these wonderful pastimes. I especially loved the ice cream pastime where Guru Maharaj is saying, give this urgently to Marici Prabhu, and then, what is that ice cream? It is very wonderful, Prabhu. Thank you so much for sharing such wonderful nectar. We want you to come again and again and share more and more. Prabhu, would you like to also mention about the safari? 2024 safari, especially it's Guru Maharaj's 75th Vyasa Puja, and how we're going to celebrate it in Vrindavan, and what is Guru Maharaj's plan, something around it, Prabhu. In the meanwhile, I would request devotees who would like to ask any queries or want to hear anything more. We have about, say, 5 to 10 minutes. We need to end by 5:40. So after that, we'll chant one round with Guru Maharaj, and then we'll do Guru Puja. So until 5:40, we can have questions. So devotees who want to ask their questions can raise their hands, or devotees who want to put it in chat also can do it. In the meanwhile, Marici Prabhu, please enlighten us about 2024 safari to Vrindavan Dham with His Holiness Jayapataka Swami Guru Maharaj. Hare Krishna. Well, I told you about my first safari in 1989, and then from there I started, organizing the safari in 1993, but it means for almost 30 years we've been doing this, and you are correct. Next year is very special because we're going to Vrindavan Dham. तो मैं सफारी लगभग 30 वर्षों से कर रहा हूँ, और आने वाली जो सफारी है वो वास्तव में आप सही कह रहे हैं, बहुत विशेष है क्योंकि इस बार की सफारी वृंदावन धाम में है। Guru Maharaj in his classes during the month of December very often mention about
this safari to Vrindavan. गुरु महाराज अपनी कक्षाओं में विशेष करके दिसंबर की कक्षाओं में गुरु महाराज बार बार वृंदावन की इस सफारी का जिक्र कर रहे हैं। Few days ago, he was mentioning that the lotus feet of Lord Chaitanya Mahaprabhu are no different than getting the direct blessings from Srimati Radharani. हरि बोल। गुरु महाराज एक कक्षा में अभी बोले कुछ समय पहले कि श्रीमन चैतन्य महाप्रभु के जो पाद पद्म हैं वो श्रीमती राधा रानी के आशीर्वाद के समान ही हैं, वो वास्तव में वही हैं। And he was reading also from the Chaitanya Charitamrita how these lotus feet of Lord Chaitanya Mahaprabhu are being worshipped by Lord Shiva and Lord Brahma. और उस दिन उन्होंने चैतन्य चरित्रामृत कक्षा में बताया कि यही वो चैतन्य महाप्रभु के पाद पद्म हैं जो स्वयं भगवान शिव और ब्रह्मा द्वारा पूजित हैं। So he thinks for a moment and he said, "Oh, I am reflecting now how the next year we're going to go to Vrindavan on the safari to install the footprints of Lord Chaitanya Mahaprabhu." और फिर वो ऐसे सोच में पड़ गए और कहते हैं कि मैं सोच रहा हूँ हम अगले साल वृंदावन में जाएंगे और वहां पे यही चैतन्य महाप्रभु के चरण कमल स्थापित करेंगे। And that footprints of Lord Chaitanya will be installed in different forests of Vrindavan where Sri Chaitanya Mahaprabhu visit. और ये जो भगवान महाप्रभु के चरण कमल हैं वो वृंदावन के विभिन्न वनों में स्थापित किए जाएंगे जहां जहां चैतन्य महाप्रभु गए थे। And Guru Maharaj mentions that whoever participates on the installation of the footprints of Lord Chaitanya Mahaprabhu will receive the blessings of the previous acharyas. जय हो। और गुरु महाराज ने ये विशेष करके बताया है कि जो भी भक्त इस प्रकार के कार्यक्रम में चैतन्य महाप्रभु के पाद पद्म जहां जहां स्थापित किए जाएंगे उन कार्यक्रमों में भाग लेंगे उनको पूर्ववर्ती आचार्यों की विशेष कृपा प्राप्त होगी। हरि बोल। So you know that this particular safari for next year, that safari will be remembered even after hundreds and hundreds of thousands of years. जय हो। प्रभु जी बोल रहे हैं कि आने वाली जो सफारी है वो आने वाले कई कई सैकड़ों हजारों वर्षों तक याद की जाएगी। Like the after tomorrow, on the 26th of December, will be the anniversary, the 93 anniversary, when Srila Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur installed the footprints of Lord Chaitanya in Kurmadesh. ओ तो आज से एक दिन के बाद 2 दिन के बाद 26 दिसंबर को 93rd एनिवर्सरी है श्रीला भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर द्वारा स्थापित भगवान श्रीमन चैतन्य महाप्रभु के चरण कमल कूर्म देश में स्थापित किए थे उन्होंने, उसका वो 93rd एनिवर्सरी है 26 दिसंबर को। Yeah, and the next day on the 27th of December, he went and installed the footprints of Lord Chaitanya in Simhachalam. और उसके अगले दिन उन्होंने भगवान चैतन्य महाप्रभु के पाद पद्म सिंहाचलन में स्थापित किए। And then 2 days later, in the place that Ramananda Roy met with Lord Chaitanya Mahaprabhu. और 2 दिन के बाद जहां पर रामानंद राय चैतन्य महाप्रभु से मिले थे वहां पर स्थापित की। December 31st in Mangalgiri, the famous Narasimha Diti. और 31 तारीख को मंगलगिरी में। So Bhaktisiddhanta Saraswati has the desire to install 108 footprints of Lord Chaitanya Mahaprabhu in different places where to remember his pastimes in India. श्रीला भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर की ये इच्छा थी कि पूरे भारत में जहां जहां महाप्रभु गए ऐसे 108 स्थान है जहां पर उनके पाद पद्म की स्थापना होनी चाहिए। But he only installed 8 of them, only 8. So मगर Guru वो Maharaj, Guru Maharaj want to fulfill
the desire of Srila Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur and install the remaining. जय। वास्तव में श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर स्वयं तो 8 पाद पद्म ही स्थापित कर पाए श्रीमन चैतन्य महाप्रभु के, लेकिन वो अब गुरु महाराज उनकी वो जो इच्छा है वो पूरी करना चाहते हैं और ये गुरु महाराज करने वाले हैं। So the safari, the next year, we're going to arrive in Vrindavan on 29 of March. तो अगले वर्ष जो सफारी आ रही है उसमें हम 29 मार्च को वृंदावन में आ जाएंगे। We're going to be 8 days in Govardhan. The first 8 days. First 8 days in Govardhan. हाँ, हम पहले 8 दिन तक गोवर्धन में रहेंगे। And will be footprints installations in holy places around like Varshana, Nandagram. और जो भगवान के पाद पद्म है उनकी स्थापना होगी गोवर्धन के आसपास वाले लीला स्थलों पे, जैसे बरसाना में, नंदग्राम में, इस प्रकार से। Kamyavan, Govardhan, Prem Sarovar, many places. काम्यवन में, प्रेम सरोवर में और गोवर्धन में, ऐसे कई स्थानों पर। Then we're going to go 8 days to Vrindavan. उसके बाद 8 दिन हम वृंदावन जाएंगे। Until the last day will be 13 of April. 13 अप्रैल हमारा वहां पे अंतिम दिन होगा। So if devotees, of course, they have the time or the holidays, because I don't know, devotees may be working, Guru Maharaj, of course, we like devotees to participate of this event. मैं नहीं जानता कितने भक्त आ पाएंगे क्योंकि उस समय छुट्टियां होंगी या नहीं, लेकिन गुरु महाराज चाहते हैं कि भक्त आए और हम ये आशा भी कर रहे हैं कि कई भक्त आएंगे। So there are two, how to say, two kind of registrations for devotees who comes on the safari. No? One is, you know, they go to Vrindavan on their own. They arrange their own accommodation, but we will provide them the transportations every day, you know, for all these 2 weeks to go to the Pastimes installation and the Prashadam. This is with some nominal charges. I think, I cannot remember, I think it's 5,000 rupees, correct. प्रभु जी बोल रहे हैं कि हम वहां पे 2 प्रकार के रजिस्ट्रेशन होंगे, जिनमें से एक तो ये होगा कि भक्त अपने हिसाब से वहां जा सकते हैं, जहां वे चाहें वहां रह सकते हैं, लेकिन हमारे साथ वो इन सभी स्थानों पे हम उनको ट्रांसपोर्ट का यानी कि बस सर्विस हम उनको अवेलेबल करवाएंगे और प्रसादम भी हम देंगे उनको। So उसके लिए 5,000 रुपया लगेगा। Another registration is there that is cost about 4 times more, because but this is includes the transport, not from Mayapur to Vrindavan, all the hotels, everything for all the 2 weeks, etc. And then all this information is in the Spiritual Safari website. प्रभु जी बोल रहे हैं दूसरा जो रजिस्ट्रेशन है वो विशेष करके मायापुर के भक्तों के लिए, जो मायापुर से वृंदावन तक आएंगे और उनके संग ही वो रहेंगे और वहीं ट्रांसपोर्ट और प्रसाद का रहेगा, वो इससे 4 गुना ज्यादा है उसका कॉस्ट शायद, क्योंकि वो वहीं इनके संग रहेंगे भी। हम दूसरे भक्त जो चाहें वो अपने हिसाब से रह सकते हैं, केवल ट्रांसपोर्ट और प्रसाद का सेवा हम ले सकते हैं। और But if devotees cannot come, no worries, it's okay also. You maybe probably will be able to watch, you know, on YouTube, on some programs, so we all can how to say, observe, you know, this glorious moment that our beloved Guru Maharaj, together with many other ISKCON leaders, will be installing the footprints of Lord Chaitanya Mahaprabhu. प्रभु जी बोल रहे हैं लेकिन अगर आप नहीं भी आ सके तो आप निराश मत होइए, क्योंकि ये सब कुछ आप YouTube पर लाइव देख सकेंगे और गुरु महाराज का जो भी इंस्टॉलेशन सेरेमनी रहेगा वो सब कुछ लाइव आएगा। Any questions? Hare Krishna Prabhu, thank you so much.
Chitra Brajasevani Mataji is asking, what was that? What were you singing in that particular instance when Guru Maharaj asked you to sing and there was no response for your singing? Was it the Hare Krishna Mahamantra? Which song is what Mataji is asking? Hare Krishna Actually, only. I was singing the song of Gurudev, Kripa Bindu Diya. Okay. And maybe also because the devotees in Bengal, they have a little different tune. Maybe I really like, anyway, I was singing Gurudev's first. Thank you, Prabhu. And one last question is one Mataji, Ladini Mataji is asking, when did you join in the service of Srila Guru Maharaj's Safari program? My first was when I drive, this is 1989. And then again, but as how to say, as organizer of Safari from 1993. Jai Prabhu, so many years of wonderful association with Srila Guru Maharaj. Haribol, Haribol. Thank you so much, Prabhu. Wonderful nectarian. We are quite surprised. It's almost 1.5 hours. We just wanted the session to continue on. So please do come whenever you are free, Prabhu. Very wonderful pastimes of Srila Guru Maharaj, and I'm sure there are many, many, many more. But we have this constraint of time. So thank you so much, Prabhu. We are very, very grateful to you. वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णववृंद की जय। His Grace Marici Prabhu की जय। His Holiness Jai Pratap Swami Srila Guru Maharaj की जय। Yeah, maybe how to say, I will tell you that Guru Maharaj, a little bit about Guru Maharaj now. You know, how I see him so absorbed in Krishna consciousness, even with all these physical difficulties. I cannot believe how many things he do in a single day. Guru Maharaj is really unbelievable. प्रभु जी बोल रहे हैं कि मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ कि गुरु महाराज के इतने सारे फिजिकल चैलेंजेस होने के बाद भी आज भी जिस प्रकार से वो कृष्ण भावनामृत का प्रचार कर रहे हैं, मैं आपसे कह रहा हूँ कि मुझे उसको देख करके विश्वास नहीं होता। Just a few days before, we were in the meeting with Guru Maharaj, and Gopesha Prabhu, one of his servants, Gopati Prabhu, he was telling just what Guru Maharaj did the day before, just because that every day is like that. So I will tell you what he did in one day. तो कुछ दिन पहले मैं गुरु महाराज के संग एक मीटिंग में था, तो वहां गोपती प्रभु बता रहे थे कि एक दिन पूर्व गुरु महाराज ने क्या किया था। So on that day he had 5 hours meetings, like different meetings for 5 hours total. गुरु महाराज की एक दिन पहले 5 मीटिंग थी, 5 घंटे तक अलग अलग मीटिंग्स थी। So he gave 2 public darshans and 3 private darshans. और उन्होंने 2 पब्लिक दर्शन दिए थे और 3 प्राइवेट दर्शन दिए थे उस दिन। He performed 2 Annaprasna ceremonies for some little babies who came for the ceremony. 2 बच्चों का अन्नप्राशन संस्कार किया था उन्होंने वहां पर उस दिन। He also gave 1 hour lecture. 1 घंटे का क्लास भी दिया था। And for 1 hour he studied Srila Prabhupada books. 1 घंटे तक उन्होंने श्रील प्रभुपाद की पुस्तकें पढ़ी थी। He preparing for his Bhaktivedanta title now. अपनी भक्ति वेदांत डिग्री के लिए पढ़ाई कर रहे हैं गुरु महाराज। And he chanted 36 rounds and 8 mantras. ओ कृष्णा, 36 राउंड्स चैंटिंग किया था, उसके अलावा 8 मंत्र और किए थे। So you just see how Guru Maharaj in one single day of his life, how much he do, you know. And तो आप देख सकते हैं गुरु महाराज क्या करते हैं अपने एक सिंगल डे में, एक दिन में गुरु महाराज कितना कुछ कर लेते हैं।
So I believe that we all going to chant together now for his health, isn't it? We're going to chant is one round. Yes, Yes. Prabhu. So let's pray. Actually, everybody pray from the bottom of our heart for his good health when we chant this round together. तो मैं चाहता हूँ कि हम सब बहुत तीव्र प्रार्थना करें गुरु महाराज के लिए। जब अब हम सब एक साथ ये माला करें, माला जप करें, तो हम सब बहुत तीव्र प्रार्थना करें गुरु महाराज के लिए। And I see also many of my god brothers and god sisters with the camera. Many don't have the camera. I don't know if they want to put the cameras. It's also good. They can also see each other. I would like to see. मैं देख रहा हूँ कि कुछ गुरु भाई बहनों ने अपना कैमरा ऑन नहीं किया है। अगर आप ऑन कर देंगे तो ये अच्छा हो जाएगा। Thank you. हम साथ में माला कर सकते हैं। Hare Krishna. Yes, Prabhu, what we do is we generally chant the Sankalpa mantra, where we offer this one round of chanting Hare Krishna Mahamantra for the good health and long life of Srila Guru Maharaj. We do that every day in the morning, Brahma Murta chanting session. We have about 15 to 20 devotees, Prabhu, who join us every day in the Brahma Murta program, where we dedicate one round of chanting for Guru Maharaj's health. And then we complete our 16 rounds. So please bless our endeavors, Prabhu. Thank you so much for sharing. And I was just thinking, Guru Maharaj is so merciful. Right from the Mayapur Mangal Aarti Darshan until Srila Guru Maharaj goes to sleep in the night, Srimad Bhagavatam, which canto he read until which verse, Guru Maharaj ensures that it's updated in the Jayapataka Swami app. So we know what Guru Maharaj is doing, right from morning till night. So Guru Maharaj keeps us updated at all times. He's our what can I say? He's our Hero. he's our superhero. Yeah. Superhero. Hare Krishna. Thank you so much, Prabhu. Vamshita Vishal Prabhu, you want to play show the slide of Sankalpa, and then we can start one round. Request devotees to take your malas, and then we'll chant one round. Shri Jayapataka Swami Drida Arogya Dirghayu Siddharte Hare Krishna Mahamantra Jape Vinyogaha. Namo Vishnupadaya Krishna Preshthaya Bhutale Srimate Jayapataka Swami Niti Namine. Namo Acharya Padaya Nitai Kripa Pradhaine Gaurakata Damadaya Nagaragrama Tarine. Namo Vishnupadaya Krishna Preshthaya Bhutale Srimate Bhakti Vedanta Swami Niti Namine. Namaste Saraswate Deve Gauravani Pracharine Nirvisesha Shunyavadi Paschatya Deshatarine. Shri Jayapataka Swami Drida Arogya Dirghayu Siddhyarte Hare Krishna Mahamantra Jape Vinyogaha. I chant the Hare Krishna Mahamantra for the good health and long life of His Honour Srila Jayapataka Swami Srila Guru Maharaj. Shri Krishna Chaitanya Prabhu Sri Advaita Gadadhara Srivasari Gaur Bhakta Hare Krishna 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 Hare 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 Ram 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram Ram Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram Ram Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram Ram Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram Ram Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram Ram Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram Ram Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram Ram Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram Ram Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram Ram Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram Ram Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram Ram Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram
Ram Ram Ram Hare 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 Krishna 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 Hare Hare Ram 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 Hare 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 Krishna Krishna Hare Hare Ram 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 Hare 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 Krishna 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 Hare Hare Ram 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 Hare 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 Krishna 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 Hare Hare Ram 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 Hare 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 Krishna 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 Hare Hare Ram 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 Hare 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 Krishna 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 Hare Hare Ram Ram Hare 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 Krishna 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 Hare Hare Ram Ram Hare 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 Krishna 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 Hare Hare Ram Ram Hare 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 Krishna 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 Hare Hare Ram Ram Hare 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 Krishna 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 Hare Hare Ram Ram Hare 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 Krishna 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 Hare Hare Ram Ram Hare 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 Krishna 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 Hare Hare Ram Ram Hare 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 Krishna 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 Hare Hare Ram Ram Hare 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 Krishna 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 Hare Hare Ram Ram Hare 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 Krishna 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 Hare Hare Ram Ram Hare 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 Krishna 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 Hare Hare Ram Ram Hare 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 Krishna 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 Hare Hare Ram Ram Hare 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 Krishna 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 Hare Hare Ram Ram Hare 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 Krishna 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 Hare Hare Ram Ram Hare 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 Krishna 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 Hare Hare Ram Ram Hare 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 Krishna 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 Hare Hare Ram Ram Hare 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 Krishna 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 Hare Hare Ram Ram Hare 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 Krishna 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 Hare Hare Ram Ram Hare 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 Krishna 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 Hare Hare Ram Ram Hare 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 Krishna 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 Hare Hare Ram Ram Hare 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 Krishna 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 Hare Hare Ram Ram Hare 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 Krishna 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 Hare Hare Ram Ram Hare 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 Krishna 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 Hare Hare Ram Ram Hare 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 Krishna 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 Hare Hare Ram Ram Hare 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 Krishna 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 Hare Hare Ram Ram Hare 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 Krishna 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 Hare Hare Ram Ram Hare 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 Krishna 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 Hare Hare Ram Ram Hare 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 Krishna 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 Hare Hare Ram Ram Hare 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 Krishna 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 Hare Hare Ram Ram Hare 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 Krishna 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 Hare Hare Ram Ram Hare 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 Krishna 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 Hare Hare Ram Ram Hare 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 Krishna 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 Hare Hare Ram Ram Hare 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 Krishna 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 Hare Hare Ram Ram Hare 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 Krishna 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 Hare Hare Ram Ram Hare 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 Krishna 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 Hare Hare Ram Ram Hare 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 Krishna 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 Hare Hare Ram Ram Hare 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 Krishna 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 Hare Hare Ram Ram Hare 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 Krishna 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 Hare Hare Ram Ram Hare 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 Krishna 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 Hare Hare Ram Ram Hare 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 Krishna 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 Hare Hare Ram Ram Hare 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 Krishna 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 Hare Hare Ram Ram Hare 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 Krishna 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 Hare Hare Ram Ram Hare 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 Krishna 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 Hare Hare Ram Ram Hare 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 Krishna 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 Hare Hare Ram Ram Hare 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 Krishna 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 Hare Hare Ram Ram Hare 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 Krishna 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 Hare Hare Ram Ram Hare 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 Krishna 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 Hare Hare Ram Ram Hare 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 Krishna 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 Hare Hare Ram Ram Hare 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 Krishna 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 Hare Hare Ram Ram Hare 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 Krishna 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 Hare Hare Ram Ram Hare 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 Krishna 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 Hare Hare Ram Ram Hare 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 Krishna 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 Hare Hare Ram Ram Hare 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 Krishna 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 Hare Hare Ram Ram Hare 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 Krishna 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 Hare Hare Ram Ram Hare 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 Krishna 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 Hare Hare Ram Ram Hare 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 Krishna 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 Hare Hare Ram Ram Hare 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 Krishna 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 Hare Hare Ram Ram Hare 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 Krishna 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 Hare Hare Ram Ram Hare 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 Krishna 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 Hare Hare Ram Ram Hare 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 Krishna 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 Hare Hare Ram Ram Hare 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 Krishna 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 Hare Hare Ram Ram Hare 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 Krishna 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 Hare Hare Ram Ram Hare 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 Krishna 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 Hare Hare Ram Ram Hare 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 Krishna 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 Hare Hare Ram Ram Hare 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 Krishna 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 Hare Hare Ram Ram Hare 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 Krishna 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 Hare Hare Ram Ram Hare 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 Krishna 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 Hare Hare Ram Ram Hare 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 Krishna 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 Hare Hare Ram Ram Hare 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 Krishna 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 Hare Hare Ram Ram Hare 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 Krishna 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 Hare Hare Ram Ram Hare 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 Krishna 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 Hare Hare Ram
Ram Ram Ram Hare 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 Krishna 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 Hare Hare Ram Ram Hare 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 Krishna Krishna Hare Ram Ram Hare 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 Krishna Krishna Hare Hare Ram Ram Hare 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 Krishna Krishna 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 Hare Ram Ram Hare Hare Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Sri Advaita Gadadhara Srivasadi Gaur Bhaktivinoda श्री जयपताक स्वामी दृढ़ आरोग्य दीर्घायु सिद्ध्यर्थे हरे कृष्ण महामंत्र जप फल निवेदनमस्तु. I dedicate the result of chanting the Hare Krishna Maha Mantra for the good health and long life of His Holiness Jayapataka Swami Srila Guru Maharaj. Hare Krishna. Thank you, dear devotees, for joining us on the 50th JSSS online program. We had a wonderful association of His Grace Marici Prabhu. Very grateful to Prabhu. Over to you, Vamshid Vishal Prabhu. Any announcements? No specific announcement. So whatever Prabhuji announced, there will be a registration form which will be circulated shortly. There is one form which is circulated already, which is like end-to-end yatra, like Marici Prabhu explained. From Mayapur back to Mayapur, the full yatra, that form is circulated. For the shorter ones, only those who are coming for a few days, or for that matter, those who are making their own arrangements and coming. So that's like a separate form which will be circulated soon, hopefully by next week, Monday, Tuesday, or something like that. That's the target. And yeah, it is going to be an exciting, mercy-filled, energetic experience. So those who can do join in that. I'm looking forward to going there, and there are, I'm sure, many of us others who are looking forward. So be there. Those who can, of course, looking at how things are. So having said that, I think let's go to let's all stand up for Guru Puja. Jaya Jaya Guru Jaya Jaya Gurudev 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 Jaya Jaya Gurudev Jaya Jaya Gurudev 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 Jaya Jaya Gurudev Shri Guru Charana Padma Kevala Bhakti Sadma Vandamohi Savadhana Mate Vandamohi Savadhana Jahara Prasade Bhan Bhavatariya Krishna Prapti Hoy Jahan Hoy Te
आरना करिहा मने आशा श्री गुरु चरणे रात्रि ऐसे उत्तम गति श्री ये प्रसादे पूरे सर्व आशा चक्षुदान दिया जय जन्मे जन्मे प्रभु से चक्षुदान दिव्य ज्ञान हृदय प्रकाशित प्रेम भक्ति जहाँ होते अविद्या विनाश जाते प्रेम वेदगा जहाँ रचरिता गुरु करुणा सिंधु आधम जनार बंधु श्री गुरु कर लोके नाथ लोके रजीवाना लोके नाथ प्रभु कर दया हमारे पद छाया बेजार दुषु त्रिभुवाना बेजार बेजाय घुषो त्रिभुवाना दया पद छाया हा प्रभु करो दया देह मोरे पद छाया आयुषु त्रिभुवाना आयुषु त्रिभुवाना जय गुरुदेवा जय गुरुदेवा जय गुरुदेवा जय गुरुदेवा Namaste.